Hello, friends. Welcome to the session on advanced critical reasoning, logical reasoning. So, ACR plays a very important role in all your law entrance examinations. You're talking about CLAT, but CLAT छोड़ के बाकी से DLET है या SLAT है, सब में इसका important aspect रहता है. So let's take the handout ACR 1. Okay, the first question that goes on your screen is all gamma. Okay, some alpha are beta. All gamma are beta, some beta are delta, no delta is alpha. So when you look at the relations here, how do we justify them? Some alpha are beta, right? Some alpha are beta. So we talk about this circle and this circle, right? All gamma are beta. So all these gammas are beta inside the beta circle, all gammas are beta. Some beta are delta. So this beta is delta. We don't know about gamma, and no delta is epsilon. No delta is epsilon. So, conclusion 1. Some deltas are alphas. Can we conclusively say some deltas are alphas? No, there is no overlap that we can see. So, 1 is ruled out. Second, some gamma are alpha. Some gamma are alpha. Can we see an overlap here? Conclusive overlap? No, so they are not there. And third, no epsilon is beta. Now, we are not given anything about epsilon and beta, है ना? Overlap हो सकता है epsilon और beta में. No epsilon is beta, it cannot be concluded. So, none of them is concluded here. The answer is none follows. So, the idea here is when we talk about the Venn diagrams, try to see हमारे पास conclusive evidence किसको prove करने के लिए. Second question. All tubes are cubes. No cube is sky. No bird is sky. This is simpler diagram than the earlier one. All tubes are cubes. So tubes are inside the cubes. No cube is sky. No cube is sky. So cube और sky में एक total है कि इनमें कोई overlap हो ही नहीं सकता. No bird is sky and no bird is sky. So bird and sky cannot be done. So here we can say here is sky सबसे अलग रहेगा. Cube, tube और bird relationship may be possible, but sky के साथ relation possible ही नहीं होगा because दोनों sets में sky is outcast. हाँ जी. Conclusion है no tube is bird. No tube is bird. We can't say that है ना. There's a possibility है कि bird could be somewhere here as well. एक possibility बनती है ना. So we can't say no tube is bird. So that is false. All birds being cubes is a possibility. Yes. If a bird comes in here, all birds inside cubes, that's a possibility because उस case में आपकी जो condition है no bird is sky is still consistent. So conclusion 2 follows here, and we say if only conclusion 2 follows. Here, by drawing the diagram, we need to understand the basic connects of the circles that we make. Statement: no dancers are actors. Some actors are artists and no artist is artist. जब ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल डायग्राम अगेन. नो डांसर्स आर एक्टर्स. डांसर और एक्टर्स में कोई ओवरलैप वही पॉसिबल ही नहीं है. सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट. सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट. ये ओवरलैप आ रहा है दोनों में. एंड नो आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट. तो जो आर्टिस्ट है आर्टिशन नहीं. आर्टिस्ट जो है वो आर्टिशन नहीं है. देयर इज नो possibility of any overlap in between. Now, conclusions. Some artists are not dancers. देखो, ये वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, वो डांसर्स नहीं हो सकते. तो some artists who are actors certainly will not be dancers. So some artists will not be dancers. This is true. Second, some artisans are not actors. Some artisans are not actors. हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है. Some artisans are not actors. All artisans can be actors, right? Or none of them can be actors. Some can be actors. So all possibilities exist here. This particular conclusion doesn't work here. Only conclusion 1. Some artists are not dancers follows. Question 4. All rivers are seas. All lakes are seas, and some seas are not oceans. All rivers are seas.
all lakes are seas, और lakes और rivers के बीच में कोई ओवरलैप हमारे को नहीं है. All lakes are seas. Some seas are not oceans. So ये वाली जो seas है हमें पक्का पता है कि oceans नहीं है, बाकी हमें किसी के बारे में कुछ नहीं. Conclusion 1, some rivers are not lakes. Some rivers are not lakes. We can't say that because river और lake के बारे में हमें कोई statement दिया नहीं है. So conclusively we can't say anything. So this is it. Some oceans may not be seas. May not is talking about a possibility. Some oceans may not be seas. They can be seas, they cannot be seas. So we don't conclusively say that. तो अगर ये conclusion होता, some oceans are seas are not seas, would have been false. But may not be seas है, which means talking about a possibility. So here this is true. Only conclusion 2 false. Question 5. Some plates are knives. Some knives are bottles. Many bottles are bowls. Some plates are knives. Some knives are bottles. Many bottles are bowls will follow again. Some bottles are bowls. Conclusion 1. Some plates are bowls. Some plates are bowls. We can't see an overlap, right? Ruled out. No, not a single plate is bowl. मतलब no plate is bowl. Again, we cannot say that because हमको direct link नहीं किया है. और this is also false. Now, it is talking about both of them are false. Plates and bowls की ही बात हो रही है. Same set of variables. And some and none, which is a complementary pair. So, which means it's an either or case. Hence, solution B works. Right? So here this is a case of either or between plates and bowls. Okay. Now there's another set of questions that we get here. एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आपको उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए. Okay. Right. So coming back here, the passage in front of you, the fewer restrictions there are advertising of legal services, more lawyers there are who advertise the services. And the lawyers who advertise the specific service usually charge less for what service than lawyers who do not advertise. Lawyers who advertise the specific service usually charge less for that service than what lawyers who do not advertise. ये core line है आपका. Therefore, if the state removes any of its current restrictions, such as one against advertisements that do not specify fee arrangements, overall consumer legal costs will be lower than if the state retains current restrictions. So what does it talk about? It's talking about lawyers, it's talking about advertising, and it's talking about an impact of advertising. If is there, what exactly it happens? मांगा क्या है आपसे? If the statement passage is true, which the following must be true. When we saying which the following must be true, it has to be directly inferred from the passage. Okay, some lawyers, so we'll go to the next one here quickly, and I think we can discriminate between these points here. Some lawyers who are now will charge more. पैसेज में चार्ज मोर की बात नहीं कर रहे है ना, चार्ज लेस की बात हो रही है. यहाँ पे हाईलाइट भी है. सो लेट्स लुक एट द कंपैरिजन. सो वन इज रूल्ड आउट. सेकंड, मोर कंज्यूमर्स विल यूज लीगल सर्विसेज. कंज्यूमर्स की बात ही नहीं हुई है पैसेज में, राइट. सो मोर कंज्यूमर्स की बात नहीं हो रही है, इररिलेवेंट है. सी, इफ द रिस्ट्रिक्शन अगेन नॉट स्पेसिफिक, यही शायद ऐड में कहा गया ऊपर स्टेटमेंट में, whoever is a specific service you charge less for what service things. Therefore, state removes its current. ठीक है. More lawyers may advertise or will advertise is a plausible solution here. पर we put a question mark here. बाकी दो options को भी देख लेते हैं. D. If more lawyers advertise lower prices for specific services, some lawyers who do not advertise will also charge less. Who do not advertise will charge less is not stated in the passage. And if the only restrictions on advertising of legal services were those, ये बात ही नहीं हुई. ये तो बहुत narrow है. Amongst all the 5 options given to us, option C seems to be the most appropriate option amongst the 5 options given, right? So, option C will be the right answer. Question 6. Same passage है, लेकिन if true would most easily weaken the argument consumer legal cost के बारे में. What I would suggest is, स्क्रीन के पास आपके पास ये आंसर कीज के साथ क्वेश्चन भी होंगे, तो जस्ट पॉज
and read it out. Okay, I'll just paucity of time and safety for each one of us to have clarity. नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें. अब देखिए इसमें क्या कहा है. We talking about weaken the argument concerning overall legal costs, right? First, the state has recently removed some of the restrictions that had limited the advertising of legal services. बात कर रहे हैं कॉस्ट और इम्पैक्ट की, राइट? लेजिस्लेशन या रेस्ट्रिक्शंस की बात ही नहीं हो रही है, तो इरेलेवेंट हो गया ए. बी, स्टेट इज अनलाइकली टू रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शंस अगेन. फिर भी इम्पैक्ट की बात हो रही है, इसकी रेस्ट्रिक्शंस की बात नहीं हो रही, इरेलेवेंट है. Lawyers who do not generally provide legal services same quality as those provided. Again, क्वालिटी की बात नहीं हो रही थी. न्यू वेरिएंट हैज बीन एडेड. इसको हम पार्क करते हैं, सी को भी, है ना. ए और बी को हमने रिजेक्ट किया है, सी को जो ब्लू कलर को पार्क करते हैं. ब्लू का मतलब है हो सकता है, नहीं भी हो, पक्का नहीं, देख लेते हैं. डी, most of now specific that would contribute to the use. Again, जो अभी इसकी कॉस्ट की बात करें, अगेन दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड हियर. तो ओनली प्लॉजिबल ऑप्शन ई को थोड़ा ध्यान से पढ़ना. Most lawyers who advertise specific services do not lower their fees for those services when they begin to advertise. आप बात कर रहे हैं भाई एडवर्टाइज करने के बाद फीस कम हो, तो उसको वीकन कैसे कर रहा है? ई डायरेक्टली वीकन, राइट? सो most lawyers who advertise specific services do not lower their fee for the services when they began to advertise. ये आपके क्लेम को वीकन कर रहा है, right? So E is the correct answer. Question number 8. Defense Department analysts worry that the ability of US to wage a prolonged war would be seriously endangered if the machine tool manufacturing base shrinks further. भाई अगर यूएस की लड़ाई करने की जो कैपेबिलिटी है और कम हो जाएगा, मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग बेस और कम हुआ तो फर्दर, मतलब ऑलरेडी कम हो रहा है बट और कम हुआ तो. और इस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में बेटे, इनको इग्नोर नहीं कराया इन वर्ड्स. Before the Defense Department publicly connected this security issue with the import quota issue, however, the machine tool industry raised the national security issue in its petition for import. मतलब मशीन टूल इंडस्ट्री ने डिफेंस डिपार्टमेंट से पहले ही नेशनल सिक्योरिटी की बात को अपने पिटीशन में डाल दिया था कि भाई हमको सिक्योरिटी फैसिलिटी चाहिए. क्यों? लेट्स हैव अ लुक एट इट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू contributes most to an explanation of the machine tool industry's failure. कि क्वेश्चन है कि मशीन टूल इंडस्ट्री ने इस इश्यू को रेज किया नेशनल सिक्योरिटी को, तो कौन सा नीचे जो आपको 5 चॉइसेस दी है इनके एक्सप्लेनेशन के साथ में जस्टिफाई कर रहा है. ए, okay, let's again look at it. A, when the aircraft industry retooled, they provide a large amount of work builders. ये irrelevant है यहाँ पे. बिल्डर्स की बात नहीं हो रही, कॉजन इसकी बात नहीं हो रही, कब उन्होंने क्या किया था, तो एक अलग सी कथा है ये. irrelevant for us. B, the defense department is only marginally concerned with the effects of foreign competition in the machine tool industry. Concern of foreign competition for defense industry is not spoken about in the passage, again ruled out. Third, the machine tool industry encountered difficulty in obtaining government protection against imports on grounds other than defense. ये हमारे थॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, राइट? लेकिन बहुत क्लोज नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, तो आप इसको क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि भाई जब हम क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं हम करते हैं ना कि वी सर्टेन ऑप्शंस वी से कि विल पार्क देम. दे आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट पॉसिबिलिटी है कि बाकी 5 ऑप्शंस जो दी हैं वो इतनी क्रिस्प नहीं होती हैं. तो लेट्स सी व्हिच इज बेटर देन द अदर 4. तो आई विल पार्क ऑप्शन सी हियर. डी, a few weapons important for defense consist of do not require extensive machining. D is ruled out completely, इसकी बात ही नहीं हुई है, irrelevant है. And E, several federal government programs have been designed which will enable domestic machine industry firms to compete successfully with foreign tool. Competition with food tool makers is not again spoken. So amongst the 5 options given here, तो C थोड़ा सा difficult लग रहा है इंट्रोडक्ट करने में कि यार वो बोल रहा है मशीन टूल इंडस्ट्री की भाई हमने तो डिफेंस की पहले ही बात की इसलिए हमको दे दो. Seems to be the only option which can connect with the given question. So even if I am not able to decipher the correct answer क्या है, let's understand by negating and discriminating between the options given to us. This question can be done that way as well. और आपके बेटा क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेजेस ये आदत बनानी है आपको.
डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द ऑप्शन, इसीलिए आपके काफी क्वेश्चन जो लगता है अनसॉल्वेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, यू कैन सॉल्व। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Opponents of laws that require automobile drivers and passengers to wear seat belts argue that in a free society, people who have to the right to take risk as long as the people who do not harm others is a result of taking the risk. भाई मैंने रिस्क लिया, आपको नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको क्या टेंशन में रिस्क लेने से? मकसद ये है। As a result, they conclude that if should be each person's decision whether to wear a seat belt or not. मतलब कहने का ये है, मेरे सीट बेल्ट पहनने से या ना पहनने से अगर मेरा एक्सीडेंट में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। That's what it's saying. Which of the following, if true, most seriously weakens the conclusion drawn about? Weaken करना है इसको, ठीक है? Okay. Let's go back here and let's discriminate here. Many new cars are built with seat belts that automatically fasten when something sits in front of the seat. तो बात हो रही है कंपैरिजन की, ये सीट कर रहे हैं साथ में बिठाने की, तो ये वीकन तो नहीं हो रही आपकी आर्गुमेंट, ये पैरेलल चल रहा है, नए एलिमेंट लेके आ रहे हैं। भाई सीट ऐसी है हमारी, सीट बेल्ट की बात हो रही है, सेफ्टी ऑफ सीट बेल्ट के थ्रू बात हो रही है, ये इरेलेवेंट है वहां पे। सेकंड, automobile injury rates of all automobile owners are higher because they need to pay for the increased injuries of deaths of people not wearing seat belts. वो ये कह रहा है स्टेटमेंट को कि भाई अगर कोई बंदा डेथ हो जाती है किसी की, किसी का फेटल इंजरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस तो सब लोग जो सीट बेल्ट पहने या ना पहने, इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे वहां जा रहा है पैसा। तो व्हाट इट सेज इज दैट इवन इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, I am paying for your insurance through my insurance, so you are indirectly affecting me. That is where it is weak. तो आगे इसमें करने की जरूरत नहीं, B is very straight, put across, so B is the correct answer. Okay, 10th इसी क्वेश्चन है ये, हम लोग कोई टेंशन नहीं होती इन क्वेश्चंस में। The cost of producing radios in country Q is 10% less than the cost of producing radios in country Y. Even after transportation fee and tariff charges are added, it is still cheaper for a company to import radios from country Q to country Y than to produce radios in country Y. दो कंट्रीज है X और Y, प्रोडक्शन कॉस्ट 10% का फर्क है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो रही है प्रोडक्शन में, जहां पे 10% सस्ता है, लेकिन तभी भी बेटर फॉर अस टू इनवाइट थिंग्स फ्रॉम देयर, दैट समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन यही है, अब इसको आप सिंपल देखें। इफ ट्रू बस सपोर्ट द फॉलोइंग assertions, कि भाई मान लीजिए इसको एग्जांपल ले देते हैं, वी आर सिटिंग इन इंडिया एंड देयर समथिंग दैट वी प्रोड्यूस इन इंडिया। चलिए कॉफी की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। आई नो मैं एग्जांपल जस्ट डिस्कशन से के लिए दे रहा हूँ। इंडियन कॉफी जो है वो हमको 110 रुपए की मिलती है। श्रीलंका की जो कॉफी प्रोडक्शन होती है वहां पे 100 रुपए की होती है, और 10 रुपए उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आसपास का जो भी खर्चा उसके अंदर आता है। तो मतलब यही है कि अभी हमारे लिए फिर भी बेटर है इंडिया में श्रीलंका से कॉफी लेके आना। क्यों? कि हमको 110 से सस्ती ही पड़ेगी। दैट्स व्हाट दिस सेइंग। व्हाट डज इट मीन? स्ट्रेट क्वेश्चन हियर। द टैरिफ ऑन रेडियो इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री Okay. The question here is the fee of transporting a radio from country Q to country Y is more than 10%. Option B या option C. Tariff on radio compared to country Q to country Y is less than 10%. कौन सा आंसर है? Tariff on a radio import from country Q to country Y is less than 10% cost of manufacturing radio in country Y. है ना, इसलिए ऑफसेट हो रहा है आपको। तो C is the answer. D क्यों नहीं है? More than 10% है। मैंने इसे पीछे साइड पे गया था, so that discrimination can be seen in black ink. Okay. 11th, during the Second World War, so many civilians died in US about. अच्छा, वो कह रहा है कि यूएस में इस नंबर 375 civilians died in US and about 408 members US armed died overseas. वो कह रहा है यार 375 3,75,000 लोग जो है वो देश में मरे और 4,08,000 देश के बाहर जाके आर्म फोर्सेस में मरे। तो फिर आर्म फोर्सेस में भी मर रहे ऑलमोस्ट इक्वली नंबर है, तो कौन से बड़ा फर्क पड़ता है फिर? राइट? व्हिच ऑफ फॉलोइंग वुड रिवील मोस्ट क्लियर एब्सर्डिटी ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट। वो कह रहे कि भैया लड़ाई करो या ना करो, मरना तो बराबर ही है। तो इस स्टेटमेंट है क्या एब्सर्डिटी? आपको वो चेक करनी है। काउंटिंग डेथ्स अमंग मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हु सर्वड इन एडिशन टू डेथ्स अमंग मेंबर्स ऑफ द थिंग, ठीक है, वो तो नहीं हो रहा है।
expressing different number of deaths as a percentage of the total number of deaths, separating deaths caused by accidents, comparing death rates per thousand or accidents in the United States of deaths. Deaths caused by combat in the armed forces. Absurdity कहाँ से आ रही है इसकी? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सारे दी है. ब्लू कलर की जो इंक है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. काउंटिंग डेथ्स अमंग मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सर्व इन एक्शन एडिशन टू डेथ्स अमंग मेंबर्स ऑफ आर्म्ड सर्विंग ओवरसीज. दैट इज नॉट अ कंपैरिजन. वी आर कंपेयरिंग people, civilians in US and army people deployed outside. Second, expressing the difference between the number of deaths among civilians and members of armed forces as a percentage of total number of deaths. The difference as a percent total number of deaths doesn't justify. Separating deaths caused by accidents due to service. Accidents की बात ही नहीं हो रही. D. Comparing death rates per thousand members of each group rather than comparing total number of deaths. वो कह रहे हैं जी आर्मी में लड़ने के लिए 10 लाख लोग गए थे और पॉपुलेशन हमारी 1 करोड़ है, तो फिर ये ज्यादा परसेंटेज हो गई ना. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड. तुम क्यों गलत कर रहे हो? और डी डिफाइंस absurdity and justifies the correct logic for this article. Question 12. Toughened hiring standards have not been the primary cause of present staffing shortage in public schools. The shortage of teachers is primarily caused by the fact that in recent years, teachers have not experienced any improvements in working conditions, and this salary has not been kept in salary with other professions. वो क्या कह रहा है? Toughened hiring standards have not been the primary cause of present staffing shortage. Hiring standard है लेकिन उससे करके staff shortage नहीं है. वो इसलिए है क्योंकि सैलरीज जो बाकी प्रोफेशंस में है वो ज्यादा ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू टीचर्स इन द स्कूल. सपोर्ट करना है क्लेम को. 5 ऑप्शन. मेनी टीचर्स ऑलरेडी इन प्रोफेशन वुड नॉट हैव बीन हायर्ड अंडर द न्यू हायरिंग स्टैंडर्ड्स. इसकी तो हायर स्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे. मोर टीचर एंटरिंग प्रोफेशन विद अ हायर एजुकेशन लेवल देन इन द पास्ट. एजुकेशन लेवल की बात नहीं हो रही. Teachers have cited higher standard of hiring as a reason for the current staffing shortage. Higher standard of hiring को already negate करना है. Support मतलब वो नहीं है उस का सपोर्ट करना है. Many teachers cited low pay and lack of professionalism. Possibly yes, right? Because वो आपको बता रहे हैं. And many teachers have cited new hiring standards as a reason for making. So here, when you go for all the options, D comes with a clear option that many teachers have cited low package and profession, and that is what is talking about the highlighted part. A proposed ordinance requires installation of new homes of sprinklers automatic trigger by the influence of fire. कि आग लगते ही स्प्रिंकलर्स एकदम ट्रिगर ऑफ हो जाए. अच्छा, एक होम बिल्डर क्या कह रहा है कि भाई 90% जो घरों की आग है वो कौन हाउस होल्ड मेंबर्स ही बुझा देते हैं. तो रेजिडेंशियल एरियाज में जो स्प्रिंकलर्स हैं उनकी कोई वैल्यू ज्यादा रहेगी नहीं. क्योंकि 90% जो घरों की आग लगती है जो घर में रहने वाले लोग वही बुझा देते. राइट. ये स्टेटमेंट है. आपको इसको वीकन करना है. की जरूरत क्यों नहीं है? वो कह रहे जरूरत नहीं है. आपको बोलना भाई वीकन करके की जरूरत क्यों है. राइट. मोस्ट इंडिविजुअल्स हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग. ट्रेनिंग की बात नहीं हुई है. आग की बात हो रही है. आग बुझाने की बात हो रही है. New homes are only a tiny percentage of available housing. New ordinance would be extremely narrow in scope, slightly out of scope of the discussion. बहुत narrow discussion को pinpoint कर रहा है. Issues smoothing new residential cost significantly. Safety की बात हो रही है. Cost is not justified for safety. अगर safety की cost ज्यादा कोई क्वेश्चन अगर आ भी जाए safety और cost का तो बेटा safety will be higher than the cost. एक मंत्र याद रखना. Fourth, in the city where the ordinance was proposed, the average time required the fire department to respond to fire was less than national average. ये हमें नंबर नहीं पता है नेशनल एवरेज क्या था. नेशनल एवरेज बहुत अच्छी है बहुत खराब हो. वी डोंट हैव एब्सोल्यूट नंबर्स. वी कैन जस्टिफाई कहीं पे आग लगे कहां पे ना लगे. लार्जेस्ट पर्सन प्रॉपर्टी डैमेज. नाउ लुक एट ऑप्शन ई. वो कह रहे हैं कि यार मैक्सिमम जो डैमेज होती है ना आग की वो उसके करके होती है जब घर में कोई होता नहीं. राइट. नाउ इसने क्या बोला है कि भाई जो घर में रहने वाले लोग हैं वही आग बुझाते. कैसे वीकन करा भाई. मैक्सिमम डैमेज तो तब होता है घर में कोई रहता ही नहीं है. जिसे घर में कोई है ही नहीं है. राइट. सो ई इज अ स्टेटमेंट व्हिच वीकन्स द आर्गुमेंट. राइट. 14th. Okay.
Even though most universities retain the royalties from faculty members' inventions, the faculty members retain the royalties from books and articles they write. तो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी जो है वो फैकल्टी मेंबर्स की इन्वेंशंस का पैसा रख लेती है. द फैकल्टी मेंबर्स रिटेन रॉयल्टीज ऑफ बुक्स और फैकल्टी मेंबर्स क्या करते हैं बुक्स की रॉयल्टी एंड आर्टिकल्स जो लिखे उसकी वो रख लेते हैं. Therefore, faculty members should retain the royalties from the educational computer software develop. अगर किसी फैकल्टी मेंबर ने कोई एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उसकी रॉयल्टी उसको रखनी चाहिए. इसका क्या मतलब है फैकल्टी मेंबर कब रखेगा जब वो बुक्स और आर्टिकल्स की तरफ से करेगा. The conclusion above would be more reasonable product features following were decided to the argument additional products. कि भाई वो कह रहा है अगर फैकल्टी मेंबर ने कोई इन्वेंशन किया है तो उसका पैसा यूनिवर्सिटी को रॉयल्टी यूनिवर्सिटी को जाती है और बुक्स और आर्टिकल्स जो होते हैं वो फैकल्टी मेंबर को जाते हैं. तो क्वेश्चन स्ट्रेट सिंपल है ये कि भाई इसका मतलब ये है कि जो फैकल्टी मेंबर एजुकेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसका पैसा फैकल्टी मेंबर को जाना चाहिए. कब जाएगा जब they will be classified as your what is it books and articles. Let's look at the answer. In terms of credit use of royalty books and articles straight question था इसमें हमको ऑप्शंस पढ़ के निगेट करने की जरूरत भी नहीं था. दो सेट्स दिए थे अगर कंडीशन ये तो ए में जाए कंडीशन ये तो बी में जाए आपने just कंडीशन जस्टिफाइड. 15 increase in the level of HDL in human bloodstream lowers the bloodstream cholesterol levels by increasing body's capacity to get rid of excess cholesterol. Levels of HDL in the bloodstream of some individuals are significantly increased by a program of regular exercise and weight reduction. मतलब ये है क्या कह रहे हैं देखो increase the level of HDL increase in the level of HDL in human lowers the cholesterol ठीक levels by levels of bloodstream of some individuals are significantly increased by program of regular exercise. रेगुलर एक्सरसाइज या वेट रिडक्शन करने से क्या हो रहा है HDL बढ़ रहा है मतलब रेगुलर एक्सरसाइज से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा. बिल्कुल. तो क्या इन्फर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स हु अंडर वेट डू नॉट रन एनी रिस्क ये नहीं कर रहे हैं. हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली ये भी नहीं है. वो एक्सरसाइज की बात हो रही है. Exercise blood is the most effective method of lowering blood sugar human beings? Question mark. Most नहीं पता. They affected, but हम इसको question mark डालें. Partially ठीक है लेकिन most का नहीं हमें पता है अभी. Program regular exercise and weight reduction lowers cholesterol in the bloodstream of some individuals. Definitely yes. Only regular exercises. Only again regular exercise. We don't know the word only because our comparison नहीं है, right? So when you look at the options here, C and D में से D is the correct option here. Regular exercise. ये क्यों हमने मना किया? मोस्ट इफेक्टिव है ना. हमें पता है देर इफेक्टिव बट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे कंपैरिजन किया होना जरूरी है विच इज नॉट गिवन. ओके पैसेज 1 होल्ड दिस पैसेज टेक अ 10 सेकंड पॉज. आई विल जस्ट बी ऑफ द स्क्रीन रीड इट. कीवर्ड्स हाइलाइटेड है इसको पॉज करके भी रीड कर लेना सो दैट वी आर एबल टू मैनेज टाइम इन द क्वेश्चन सेक्शन. Okay. See, you're pointing on the screen here. A couple of things are marked in emboldened font, है ना. Passage is primarily talking about किसी ने first year as an entrepreneur शुरू किया था. As we said, first paragraph is always the most important paragraph, and so is the last paragraph. तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. In my first year as an entrepreneur, I grew my client list, got engaged, paid the bills, survived a car crash. He's talking about the problems that he faced and challenges, not problems, challenges he faced. Then, somewhere in the middle, launching a business, assessing market, क्या क्या उसने किया है. Third, one of the most exhilarating aspects of being an entrepreneur is making a plan and taking risks to grow your business. Third element coming in. You must conquer yourself through mindfulness without becoming either overly confident or ridden with ego. Human aspect here. Or any of the other streaming signs that you have fallen or low points. Okay. And last line, you must do what others are unwilling to do. Now he's talking about how he's managed his first
year of the journey of entrepreneurship and challenges he faced and some opportunities he latched on. Right. So that's a summary of the passage. These two examples in a deal. Let's go to the questions. Which of the following is the primary purpose of the behind writing this passage? Okay, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को. To inform the readers of pitfalls of owning a business. Is it about only pitfalls? No. So there's बहुत question streamlined एक particular direction में challenges है pitfalls में. To give readers a heads up regarding the challenge that one might face initially. He's not giving readers a heads up. वो अपनी स्टोरी बता रहा है. Heads up होता है मैं दुनिया भर के बताऊंगा न्यूटन ने ये किया, रतन टाटा ने ये किया, अंबानी ने किया, देन विल बी हेड्स अप. किसकी जिंदगी में क्या है? हेड्स अप बहुत वाइड टर्म है. वो हेड्स अप नहीं दे रहे, वो अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता. Third, to summarize whatever the author learned during the first year of his journey, possibly yes. This is thoughts on how to run a successful business. अभी इसको हुआ ही नहीं है, अभी शुरू के साल में ही successful business नहीं. So here C is the correct option, right? Idea is how to discriminate between choices. When you start reading this session, जिस पैराग्राफ्स में मैंने जिन कीवर्ड्स पे हाईलाइट किया हुआ है पैसेज में, आदत बनाओ उनको कि जब आपको पैसेज मिलता है ट्राई टू मेक अ मेंटल नोट और अ फिजिकल अंडरलाइन इफ यू कैन डू इट. क्लैट के पेपर को अंडरलाइन आप कर ही सकते हैं, तो अंडरलाइन करने की आदत. It can be inferred from the passage that a true entrepreneur does not want to go back to a full-time job even though the chips are down. A true entrepreneur की बात हो रही है. Let's put a question mark here. The turning down of the offer of an executive marketing position worked into the author's advantage. Being an entrepreneur, one is required to do things that others are unwilling to do. And entrepreneurship is not about taking chances in life, it's also about understanding the market conditions. अब कुछ चीजें हैं जिनका partial reference है, लेकिन they may not be directly inferred from the passage. Let's have a look at it. Discrimination में base पे करेंगे उसको. True entrepreneur does not want to go back to a full job. Does not want to go back to a full-time job even though chips are down. He says they may have some choices there, but he doesn't make a strong statement, does not, did not. Right? One is ruled out. Second, turning down the offer of an executive marketing will work to the author's advantage. He's talking about his story here. अपना example दे रहा है, relevant to the context भी है, तो please, possibly yes, C or D पढ़ लेते हैं. Being an entrepreneur, one is required to do things others are unwilling to do. बहुत broad statement है, others are unwilling to do. May have been given in small context of some other incident. But the blanket statement open nahi hai. And the entrepreneurship is not only about taking chances in life, it's also about understanding the market conditions. Market conditions is one part of entrepreneurship. It's not the holistic part. So here, D is about the most appropriate answer. Right? There could have been better inferences. Let me also say that. But of the 4 options given here, 4 is the most appropriate. Okay, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा. Which of the following has been mentioned as a challenge that one faces while launching a new business? Highlighted part था, उसमें ये आंसर्स फिट इन कर आपको करके रखे हैं. Thoughts कहाँ पे हैं? Assessment of market opportunities, financial insecurity, alignment of right team, and anxiety surrounding the future. All of them are there, and they have been mentioned in the passage. Direct question, right? If you get time and you can refer back, चलो मैं आपको एक reference frame से कर देता हूँ इसके लिए. This part here, if you look at this part here, you'll get the answers. That's why I'm saying कि जहाँ पे भी thought नया हो, जहाँ पे भी नया point हो, just add on to the value that you're putting in question. Okay, right? So here all of the above the answer. Next, which of the following can be but the author's stance on entrepreneurship? Now see, earlier the question was on entrepreneurship. Now we talk about the author's stance on entrepreneurship. So here we'll talk about author's stance. What's a specific question related to the author's overall outlook? Author believes in living the life one desires even if it requires tough decisions to be made. The author believes in taking undue risks because the greater the risk, the bigger the reward. The author doesn't mind a safer bet even if it costs you your dream. Hell bent on taking the plunge even if the risk is small. अब ये चारों लग रहे हैं कि पैसे से डायरेक्टली आ रहे हैं, राइट? बट थोड़ा इसको डिस्क्रिमिनेशन से देखो, डिस्क्रिप्शन से देखो, आपको खुद समझ में आएगा. A, the author believes in living the life one desires even if it requires tough decisions to be made. Possibly yes, I can correlate with this one. Second, believes in taking undue risk.
द टर्म इसमें अनड्यू, रिस्क बोला है, अनड्यू नहीं बोला, गाड़ी चला के छत से नीचे गिरा दे, पहाड़ी से नीचे गिरा दे, नहीं बोला है, इसने अनड्यू रिस्क नहीं बोला, रिस्क बोला है, तो वी एलिमिनेट दी हियर. ऑथर डजंट माइंड टेकिंग अ सेफर बेट इवन इफ इट कॉस्ट यू योर ड्रीम. भाई उसके तो टोटली अगेंस्ट है, वो तो कह रहा है कि रिस्क लेना चाहिए अपने ड्रीम को लिए, राइट. एंड hell-bent upon taking the plunge. She is not hell-bent. Hell-bent होता है पक्का है कि मैंने कुछ भी हो, जिद है, मतलब सब कुछ छोड़, उतना नहीं. Hell-bent and undue risk are very strong adjectives keeping in tonality of the passage. तो इन चीजों को ध्यान रखना कि उसने स्टैंड लिया है, उसका टोनालिटी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन लिया है या इंटरमीडिएट. रिस्क लेना जरूरी है यार, लेकिन क्या मतलब छत से छलांग मार देंगे, वो उसने नहीं बोला. हेलबेंट नहीं है, अनड्यू रिस्क नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई हैड टू कम टू दिस स्लाइड बिफोर वी गेटिंग ऑन टू द आंसर्स. चलिए, which of the following best describes the contextual meaning of the phrase run for the hill. अच्छा, ये माय पर्सनल एडवाइस यू, बिकॉज पेपर जो आपके सामने होगा, तो बिना पेपर को रेफर किए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर. ठीक है. द रीजन इसको रन फॉर द हिल कहाँ लिखा है, कहाँ इसको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आंसरिंग दैट पॉइंट इज वेयर टू पुट अक्रॉस. Read this part up, take a pause here. Run for the hill will be somewhere in this section. ठीक है. Or any of the other screaming signs that you have fallen to a low point. It's very tempting to run for the hills and go back to working full time. अब इस स्टेटमेंट को, इसको इट्स वेरी टेम्पटिंग टू रन फॉर द हिल्स एंड गो बैक टू वर्किंग फुल टाइम, समझ में आ गया किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, राइट. तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हमको रेफर करना होगा, हम करेंगे भी. ठीक है. टू इग्नोर द थ्रेट एज मच एज पॉसिबल, ये तो नहीं कहा है. उस जगह गो बैक, भैया है ना. इनकलकेट द नीड टू रिमेन अलर्ट, ये भी नहीं कहा. मूव टू हायर ग्राउंड इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, हायर ग्राउंड की बात ही नहीं हुई है. गेट अवे फ्रॉम सिचुएशन, गो बैक ड्यू टू कमिटमेंट इश्यूज, पॉसिबली यस, राइट. सो कई बार हमको कॉन्टेक्स्ट में, हमें कोई अगर इंग्लिश का वर्ड या फ्रेज हो तो प्लीज रेफर बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, किस रेफरेंस में कहा गया है. 90% आपके आंसर सही हो जाए. अगेन टेक अ 10-second pause. आई एम गिविंग अ 10-second pause, but stop your laptop and your machine, read it, and then we'll come back. Okay, so I think थोड़ा सा इसको ध्यान रखते हैं. Indians can be excused for looking eastward with more than a little envy. In 1980s, GDP, India GDP in purchasing power parity terms were nearly twice that of China, but then dragon took off. By 2021, Chinese incomes per person were more than double than those in India. लेकिन yet when it comes for stock market, then पूरा stock market की कहानी बना. ठीक है. What are the factors we've been saying that? Now इसमें key highlights है. Plenty about regulation in India is still a forbidding from the complexity of its tax system, sheer number of its import tariffs. Yet some modest tweaks over the past 3 years or so may be the beginning to bear the fruits of stock market. Then corporate tax and a promise वगैरह वगैरह कुछ financial incentives है. Then he says home builders, cement equipment, clothing firms, cotton have done well and have chemical companies. So when you look at the thought process here, he is talking about China से इंडिया आगे था, चाइना की इकोनॉमी ग्रो की, लेकिन स्टॉक मार्केट इंडिया की ग्रो कर रही है. एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड द रिदम, दिस टाइप ऑफ पीपल मेकिंग सम कमेंट्स ऑन टू इट एंड इंडस्ट्री सॉरी, राइट. So the idea is how will we identify 3 key elements of this passage? Okay, which is following represents central idea of the passage. Indian stock market has performed exceptionally well on the back of a strong domestic showing. Domestic showing, शायद लास्ट पैराग्राफ में कहा था, पर हमें नहीं पता डोमेस्टिक की ओवरसीज है, बट है.
India stock market on the brink of a major upturn since the fall of COVID-19 pandemic. Major upturn. India stock has outperformed almost all the other markets comparison. ठीक है, and India stock now showing tremendous return on the back of small changes made in the past. अच्छा, ये चारों थोड़े बहुत लग रहे हैं कि हो सकता है ये भी हो, क्योंकि मेरा नॉलेज है इसके बारे में. अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए इसको आगे नहीं ले जा रहा हूँ. जिस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होता है ना, 90% लाइकलीहुड है कि हमारा गलत है, क्योंकि पैसेज आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा है. पैसेज चेक कर रहा है कि जो लिखा है आपने उसको ठीक से ऑब्जर्व करके कॉम्प्रिहेंड किया है कि नहीं. राइट, दैट इज वेयर this point comes in. Now let's look at the discrimination here. Indian stock market has performed exceptionally well on the back of strong domestic showing. Well, exceptionally well, domestic showing, not clearly tangible aspects of the passage. On the brink of major upturn since the fall of COVID-19 pandemic, major upturn since pandemic, again, बहुत powerful statement, not as per the passage. Stock market outperformed almost all other major stock markets of the world. We don't have a comparison for the other stock markets. And now showing tremendous return. हाँ, जो policy decisions थोड़े बहुत government ने किए हैं उस पर दिखा. Again, I would say D may not be the best answer, but of the four given choices, the most appropriate answer. Okay. India stock market except एक word है बेटा. Which of the following can be inferred about India stock market except, right? Big IT multinationals have generated huge ROIs. Company in various sectors have performed as well. That we saw that in the last paragraph. Despite great returns, market still thinks rise of Indian stock market is transient. ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, बिकॉज इतना कहा नहीं गया ट्रांजिएंट है कि कुछ दिन में गिर जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, ये नहीं है. Despite positive atmosphere, domestic economy is also a major factor of the rise of the stock market. तो कौन सा नहीं कहा गया? IT national multinationals has been stated there, उनके लोगों का statements भी है. Various sectors have performed well, has been stated in the last paragraph that we highlighted. Despite great returns, market still thinks rise of Indian stock market is transient. Transient word कहीं use नहीं किया. Fear of failure of future has not been added in the paragraph. So question mark on this one. And D, the positive atmosphere surrounding the domestic economy is also a major factor for the rise of the stock market. Has been given there. हमको accept निकालना है कौन सा? Option C. Despite great returns, the market still thinks the rise of Indian stock market is transient. Has not been quoted in direct or indirect references anywhere in the passage. Okay. Which of the following has resulted in retail investors opting to invest big in Indian stock market? ये अपना नॉलेज नहीं डालना है बेटा, पैसेज के रेफरेंस से बोल रहा है. Performance of India stock market in the last few years. India's ability of India stock market to bounce back from the debt. India stock market giving returns to of almost 50%. Rise of stock market as an alternative to traditional investment schemes. Elimination से करें या डायरेक्ट आंसर से करें, the question is very clear. Performance of India stock market over the past few years. उसी की एक्चुअली बात भी हुई है पैसेज में. Ability of stock market to bounce back from the debt. डेथ की बात नहीं हुई, जहां से इंडिया पहले अच्छा रहा फिर डेड हुआ फिर दोबारा हुआ. बाउंस बैक फ्रॉम द डेट वुड मीन आपको तीन तरह के इनपुट्स पता होने चाहिए कि पहले अच्छा था, खराब हुआ, फिर अच्छा हुआ, है ना. तो हमारे पास ये तीन रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए हम 2 का आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं. इंडिया स्टॉक मार्केट गिविंग रिटर्न्स ऑफ ऑलमोस्ट 50%. वी डोंट हैव दोस रेफरेंसेस हियर. राइज ऑफ स्टॉक मार्केट एज एन अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बेसिक्स एलिमेंट्स हमको नहीं दिए हैं, जिसके बेस में ढंग का कंक्लूजन आपके साथ ड्रॉ कर सके. सो हियर इज द ओनली प्लॉजिबल ऑप्शन गिवन आउट ऑफ द ऑप्शंस. Okay, which of the following are tweaks that have aided in growth of India's stock market? Both corporate and retroactive tax rates have been significantly reduced. Government has provided financial incentives to manufacturers of small firms, and the overall bullish mood has also resulted in strong showing. Here, the answer is clearly 2 and 3. Clearly, passage में 1. Both corporate retroactive taxes have been significantly reduced. एक पैसेज में पैराग्राफ के राइट साइड वाले पैराग्राफ में टॉप पे मैंने टैक्सेस के एक एलिमेंट को हाईलाइट किया था, रेफरेंस का फ्रॉम देयर.
एक आदत ये बनानी है जब आप पैसेज पढ़ते हैं, क्या थॉट्स पैराग्राफ में है वहीं पे अंडरलाइन कर, आपको आइडेंटिफाई करना एकदम आसान हो जाएगा। अगर रेफर बैक भी करना पड़े तो आपको पता है कौन सा पॉइंट कहाँ है। पैसेज 3 मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, टेक 10 seconds, आई विल पॉज इट अगेन, टेक योर टाइम, read it, understand the highlighted points, and then we'll discuss the questions. Okay. अब इसको पैराग्राफ को पहले शुरू से टेक द फर्स्ट कपल ऑफ लाइन्स हियर. One way of looking at human creativity is the process of pulling balls out of a giant urn. Giant urn समझ नहीं था, छोड़ दो, वही क्या करें, बॉल निकाल रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं. The ball represents ideas, discoveries, and inventions. Over the course of history, we have extracted many balls. Most of them have been beneficial to humanity. ठीक है, मैं जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको रेफर करना. What we haven't pulled out yet is a black ball, a technology that invariably destroys the civilization that invents. भाई अभी तक हमने ऐसी कोई डिस्ट्रक्टिव बॉल निकाली नहीं जो सिविलाइजेशन को खत्म कर सके. We have been just being lucky. ठीक है, जान के ऐसा नहीं हुआ है, किस्मत से हुआ ऐसा. That's what is यहाँ तक नहीं, बाकी इसको थॉट को जस्टिफाई कर रहा है आगे का पार्ट. Okay, आगे बात हो रही है developing inventions के, and eventually they would find their way into the hands of nihilists, extortionists, of people who just want to see what would happen if they have a nuclear device. Through strict surveillance, information network, security rates, we now left to somehow recognize civilization that other essentials that are deemed to be. तो आपको जब मैंने कहा था पॉज करने के लिए, इस स्क्रीन को आपने पॉज किया है, आई होप आपने प्रिसाइजली अंडरस्टैंड किया है. बट अगर नहीं है then let me go to the key points once again, which we'll discuss as we talk. Now see, this passage is talking about humans, invention and discoveries. It says कि हम लोग अब तक जितने डिस्कवरी इन्वेंशंस किए हैं, फॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसे है कि कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं रही है ना. एंड बाकी सब जस्टिफिकेशन है, फिलोसॉफिकल एंगल है. अगर डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी हो तो क्या उसका हो सकता है, राइट. Last again, we are lucky that making nuclear weapons turned out to be hard. We pulled out a grey ball that time. Yet, with each act of invention, humanity reaches a new into the. मतलब हम कोई भी चीज डिस्कवर करते हैं, हो सकता है उसे नेगेटिव पिटफॉल भी. तो पैसेज जो है डेफिनेटिव नहीं है, हालांकि एग्जाम्पल दे रहा है, बट थोड़ा सा हेजी है कि यार आगे कुछ भी हो सकता है ना. तो इस चीज को ध्यान रखना है when we answer the questions. Which is following best summarizes the passage. Humans can invent a technology that is capable of destroying human civilization, though the inventions have not reached that point. However, we can never know what the future holds. Possibly, yes. Humans are close to creating a technology that can wipe out a human civilization. It's of utmost importance the world to unite against it. Question mark है, but इसमें एक word which I am thinking close to creating a technology में close और distance का पता नहीं है. See, sooner or later, technology capable of wiping out humans might have been invented. How far would we go to stop it? Something that is yet to be answered. थोड़ा सा डाइसी लग रहा है ये. क्यों लग रहा है डाइसी? We are not about a technology capable of wiping out human civilization, but थोड़ा सा जहन में रख लेते हैं. हो सकता है CPU पहली पढ़ाई में लग रहा है, पर B outrightly rejected है. तो A और C थोड़ा सा देख लेते हैं. D पढ़ें. A technology capable of destroying our universe is right on the cusp. नहीं भैया, cusp नहीं है. The बहुत strong statement है. A और C में से एक आंसर है. Humans can invent a technology that is capable of destroying human civilization, though their inventions have not reached that point. However, we can never know what the future holds. थोड़ा सा ओपन लग रहा है स्टेटमेंट. सी पढ़ें. Sooner or later, a technology capable of wiping out human civilization might be invented. How far will we go to stop it? It is something that is yet to be answered. कहाँ जाएंगे स्टॉप करने के लिए हमें पता भी नहीं है उसका. तो out of the given options here, A and C में, C is completely out because it doesn't give a straight conclusive link to the passage. पैसेज की लास्ट लाइन मैंने इसे कहा था, ध्यान से हाईलाइट भी किया था कि फ्यूचर में कुछ होगा, लेकिन हमने ये हाउ फार वुड बी गोइंग टू स्टॉप इट, समथिंग इज समथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज हियर. Humans can invent technology, yes. Capable of destroying human civilization, yes. Directly linked to the passage.
though the inventions have not reached that point, ये भी passage में identified है. However, we can never know what the future holds. That is what the next ball could be taken out from the earth. So, A very crisply and concisely is relevant to whatever we read. Okay, why does the author believe that we have been lucky when it comes to scientific discovery? Lucky क्यों रहा है? Nobody even in the wrong mind has thought about creating it that could destroy the civilization. Okay. Despite being careless about the consequence of innovations, we have not developed anything that can come even close to destroying the whole planet. The technology needed to discuss is exceedingly difficult to master. Nobody is working on that, I hope. And we have managed to differentiate what kinds of innovations have good in fact. अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो पहले ये करना है बिफोर इवन गिविंग अ डिस्क्रिप्शन एलिमिनेट कर दो कौन कौन से ऑप्शन तो कर सकते हो इसमें राइट तो व्हेन यू डू द फर्स्ट कट एलिमिनेशन हियर आप देखो सी और डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है सी और डी बिकॉज द टेक्नोलॉजी नीडेड टू डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मास्टर वी हैव नॉट इवन डिस्कस्ड कि हम बना रहे हैं मास्टर करने डिफिकल्ट है and we have managed to differentiate what kinds of innovation are good and what are bad. Comparison of innovation, good, bad, mastering them has not been able to get onto the passage. So A और B में वैसे एक देखें कौन से वाला है? Nobody even in the wrong mind has thought about creating a technology that could destroy the civilization. भाई वो तो कह रहे हैं ना destructive technology जहाँ atom bomb की बात हो रही है. So A is ruled out. So B, despite being careless about the consequences of innovations, we have not developed anything that can be close to destroying the whole planet. That has been clearly interpreted from the second paragraph. Okay. None of the following statements can be in from the passage except. ये थोड़ा ध्यान रखना इसका मतलब क्या है? None of the following statements can be inferred from the passage except. मतलब none except मतलब which one can be inferred? Right? Okay. Nuclear weapons can lead to destruction. Every country learns how to master it. Can we from the passage? Every country? We don't know. Eliminate it. The US would try to force the issue and prevent any world war if it arrives. Not clearly explicitly said in the passage. We cannot come up with a planet-threatening technology and not put अंग्रेजी इसमें question mark डाल देता हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा अंग्रेजी कैसे. ठीक है? I'm very clear with you. There is no such technology that can completely destroy a universe. There is no technology that cannot do it. Question mark on this one. Right? Okay. Now let me say very clear. If I had to get a question अगर मेरे को अंग्रेजी समझ में नहीं आती और elimination में I'm not good at elimination, negative mark का question है इसको छोड़ दे. अगर आपको elimination technique का नहीं पता है जो हम यूज कर रहे हैं on what are words you're doing आपने क्लास में नहीं सीखा है and you're not good at eliminating and you don't understand the option C here, please ignore this question. Because A, question in language, none of the following except is a topsy-turvy language. And C, we cannot come up with planet-threatening technology that cannot properly develop thing. It's again a question mark here on this thing. C is the correct answer here, but I would suggest here, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन में कि लैंग्वेज बहुत टिप्सी-टर्वी होगी एलिमिनेशन टेक्निक वहां पे यूज करते हैं जो हम क्लास में सिखाते हैं बट अगर इफ यू आर नॉट गुड एट एलिमिनेशन तुक्का मार के नेगेटिव पॉइंट नहीं है ठीक है इग्नोर दैट बट हियर वी कैन नॉट कम विद अ प्लैनेट थ्रेटनिंग टेक्नोलॉजी एंड देन नॉट प्रॉपर्ली डेवलप टेक फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी वी कैन नॉट कम विद अ प्लैनेट थ्रेटनिंग टेक्नोलॉजी भाई हम कर सकते हैं एंड और टेक्नोलॉजी को सेक ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए उसको पॉजिटिव कर सकते सो द आइडिया इज टेक्नोलॉजी बना के नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट as part of a solution C is the answer but as part of my mentoring advice to you तुक्का मार के नेगेटिव नंबर नहीं लेना है ठीक है चलिए नेक्स्ट which of the following statements are true with regard to the fourth paragraph of the passage okay now when you say fourth paragraph we have to refer back to it पहले एक बार options पढ़ लें then we'll go back paragraph is not likely to be true in few years paragraph uses hypotheticals to build a strong world that is free from all the threatening elements. The world as depicted in the fourth paragraph can be considered an extreme case scenario to reduce the threat on human.
Okay, now this is what we talk about. Fourth paragraph. Please go through it. I'll just take a save from the screen. Okay. So we would we would be left to try somehow reconstitute civilization without electricity and other essentials that are deemed too risky. That's the optimistic scenario. In a more pessimistic scenario, law and order would break down entirely and societies would split into factions waging nuclear wars. Disintegration could end only when the world has been ruined to the point where it is impossible to make any response or many furthermore bombs. Even then, the dangerous insight would be remembered and passed down. So, if we are lucky that making nuclear weapons turned out to be hard, we pulled out a grave all that time. Yet, with each act of invention, humanity reaches a new earth. नया इन्वेंशन के साथ हम न्यू अर्न में एंटर करते हैं, right? So if we look at the paragraph here, the person is not likely to be in a few years. That's what he's on the time frame here. Hypotheticals to build a world that is free of threatening elements, defined there clearly. Depicted in fourth paragraph can be considered extreme case scenario to reduce the threat to humankind. So all of them are true. So all of them follow. आइडिया मैंने रेफर इसलिए बैक फ्रेंड में किया था बिकॉज शायद सारे के सारे तीनों हमको पॉइंट्स एकदम याद भी ना रहे हो बिकॉज पैसेज की इंग्लिश थोड़ी सी हैवी है ना, तो हो सकता है कई बार हमको रेफर बैक भी करना पड़े. डोंट फील बैड अबाउट इट, भाई नंबर लेने हैं हम. अगेन पैसेज 4, टेक halt your screen, read it, understand the highlighted points. As a native of Burma or Myanmar, the title freedom and literature seems surreal to us in the recent past. किसी ऑथर की बात कर रही है ना. However, for me, literature itself as a creative reading is always relates to freedom. Okay. The way it connects people, writers and readers or readers and readers through freedom. Though I was released after 5.5 years back, वो जेल में वाला था 20 साल रखने के लिए 5 साल का रिलीज कर दिया. उसका कोई एड्रेस पब्लिश नहीं करता लेकिन मैंने किया. So even though a writer is not in prison, he or she has very limited freedom in Burma, not only in creating literature but in publishing it as well. Right? So for Burmese literature, creativity does not come from the freedom we have, but the freedom we want to have. वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी क्रिएटिविटी है वो जो फ्रीडम हमें मिली है उससे नहीं है, जो हम फ्रीडम चाहते हैं वहां से. मोर ऑफ इमेजिनेशन दैट पुटिंग हियर. In this sense, we still call literature as an art which holds freedom. Censorship prohibits only the publishing of literature, not its freedom. And then we need not only this is the last one. As I always say, always pay attention to the first 5 opening lines and the last 5 closing lines of a paragraph or a passage. What was the effect of imprisonment of the author later in her career? Author couldn't get a media license. Editors were wary of publishing the author's work, or the author wasn't invited to edit the publication of publisher. Direct question from the passage, all of them. डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज एक बार पढ़ा है तो इसमें को ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है. सेकंड पैराग्राफ में पूरा का पूरा हाईलाइट है. Which of the following is not true about the author? The author was imprisoned for 20 years in Burma. Author wanted to run a news or current affairs journal. The author was not permitted a license to run a health journal. The author is a Burmese writer. Not true. We highlighted that. 20 साल का मिला था लेकिन 5.5 साल में उसने छोड़ दिया था, है ना. तो ऑथर वाज इन प्रिजन फॉर 20 years in Burma is a wrong statement. Which of the following is an incorrect inference from the passage? Burma has stringent censorship laws in literature. Burmese literature censorship limits even the freedom of creativity in writings. The author is against the censorship of literature in Burma. Censorship and ensuring dubious attitude of the publishers are seen by the author as deprivation of the freedom from fear, hate and dependence. अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान से रखना है कि इसमें ना मिसलीडिंग आंसर बहुत सारे हो सकते हैं. Burma has stringent censorship laws in literature. That's true. Burmese literature censorship limits even the freedom of creativity in writing. अगर वो नहीं होता, अगर ये ट्रू होता तो मैडम राइटर कैसे बनती, राइट? तो दिस इज नॉट द correct reference or incorrect inference
जो है वो बी, बिकॉज शी बिकेम अ राइटर, है ना, एंड शी इज टॉकिंग द राइटर स्टफ हियर. तो ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था. Which of the following can be the most appropriate title for this passage? How far is literature from freedom? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका एक रीजन है why we should be what should be thinking about the passage and giving a title. How far is the literature from freedom? Literature freedom बहुत बड़ा है, ये बर्मा की बात नहीं कर रहा था ना, थोड़ा सा हमको बर्मा का एंगल साथ में लेके चला कि बर्मा की बात. The pressing need of freedom, the imaginative power in literature. Literature बहुत वाइड फील्ड अगेन है. लिटरेचर होता है यूएस लिटरेचर, यूके लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, वी डोंट नो दैट. लिटरेचर नीड्स फ्रीडम एंड फ्रीडम नीड्स लाइफ. लिटरेचर अगेन पहले तीनों जो है वो लिटरेचर और फ्रीडम की बात तो कर रहे हैं, पर बर्मा का कॉन्टेक्स्ट डेवलप ही नहीं कर रहे, तो वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉक अबाउट. द बर्मा एंड इट्स स्पॉन्सरशिप लॉज इन लिटरेचर. बर्मा एंड इट्स सेंसरशिप लॉज इन लिटरेचर. ये डायरेक्टली बर्मा को कनेक्ट भी कर रहा है, लॉस को भी कनेक्ट कर रहा है, सेंसरशिप को भी कनेक्ट कर रहा है. Oh, okay. Which of the following can be most appropriate title for this passage? Literature needs freedom and freedom needs literature, and Burma needs literature laws in nature. Okay. Right, so we discussed question number 31. Let's go to question number 32 now. Which of the following can most appropriate title of this passage? How far is literature for freedom? The pressing need of freedom in literature. Literature needs freedom, and Burma and censorship laws in literature. Now, see, passage में A and B are talking about freedom, literature, very wide field में. Third way, interdependence of literature and freedom are coming together, so we need to bring them together. Freedom and freedom integrate them. And fourth, Burma and censorship laws in literature. Now, लॉस के बारे में बात नहीं हो रही है ना, सेंसरशिप लॉस की बात नहीं हो रही है. थोड़ा सा इम्पैक्ट और सेंसरशिप लॉस का बर्मा में लिटरेचर के ऊपर, लेकिन लिटरेचर के ऊपर सेंसरशिप लॉस का पूरा इम्पैक्ट नहीं बता रहे हैं. सो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन here. Literature needs freedom and freedom needs literature. Passage 5 again. Take a 10-second pause and then we'll go. It is talking about a world is witnessing great regression. Return to childhood manifests in the things we consume and how we spend our time. वो कह रहे adults are having less sex and living with parents longer, and they are burrowing under weighted blankets and escaping into the childish comforts of coloring books. मतलब once somebody is growing up, he is getting back into the childhood stuff. And then उसको justify कैसे कर रहा है passage वो? Now look at that. Highlighted points को ध्यान से पढ़ना है. This return to childhood manifests in the things we consume and how we spend our time, even in the ways our societies are governed. It's easy to assume the worst of the Great Regression, for the Western societies have long treated the idea of finalization with unlearned content. One. Second, Sigmund Freud reframed regression in psychological terms. Regression की बात हो रही है, psychological पूरा ये पूरा passage उसको ध्यान से यहाँ तक पढ़िएगा. Then you talk about critics miss two important points. One is that there is a nourishing form of regression that harnesses playfulness, creativity, diversity of childhood, but there is also a destructive form that manifests as blind rage. Both forms of regression are fueled by certain disappointment with society. Right? Philosophical है थोड़ा ये passage. उसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा, लगा लीजिएगा. We have no future because our present is too volatile, wrote William Gibson. And then it's talking about it. After swaddling myself in nostalgic comforts and babying my brain through 3 consecutive lockdowns, wrote the journalist Olive Baumstein to magazine, I have noticed that inner child is now the outer person. Right? Now, philosophical passage है, बड़े लोग रिग्रेस कर रहे हैं बच्चों की तरह, उनके बिहेवियर की बात हो रही है. सोशल थोड़ा सा इम्पैक्ट उससे दिखा रहा है. सेल्फ साबोटाज, यूथ फ्रेंडली वगैरह वगैरह बहुत हेवी टर्म्स हैं यहाँ पे लिखे हैं. What is the primary purpose of the passage? To criticize the return of adults' childish behavior and comfort, which have been dubbed as a great regression. To argue the great regression can be nourishing to highlight flaws in the reasoning of its critics. To argue in opposition to criticism, the great regression affects a beneficial trend, and to undermine the argument of the critics. पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए. Let's go back to the point here of discrimination. यहाँ पे discrimination लगाना जरूरी choice. To criticize the
return of adults to childish behavior and comfort, which has been dubbed as the Great Regression. Does he criticize it? This is the word because of which I will eliminate this option. Argue, yes, the argument can be nourishing and to highlight the flaws in things. Argue मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टैंड लिया है, उसे दोनों में लिया है, बैलेंस करके चला है, तो हमें बी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखते हैं. To argue that in opposition to criticism, great regression reflects a beneficial trend. He is not talking about such a strong statement कि beneficial trend great regression का reflect कर रहा है adult life में. तो C outrightly rejected है. C बहुत strong observation है, वो उतना strong observation उसने लिया नहीं. And D, to undermine the argument that the critics sense a purely moral failing by pointing out its benefits. He is not undermining it. Option A को eliminate criticize करके, D को undermine करके. C और B में थोड़ा बहुत confusion अगर आपको होता है तो आप ये देखना कि opposition towards criticism. He is not giving an opposition to criticism. He is saying a balanced approach. And he talks about positives as well as flaws को address भी कर. So बैलेंसिंग. अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा टोन का थोड़ा ध्यान रखना है पैसेज में और उसमें क्या स्टैंड किया है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टोनैलिटी ऑफ द पैसेज एंड द स्टैंड टेकन बाय द ऑथर, possibly we may be able to eliminate some of the options. Now let me come across a very straight question here. A और D को आपने eliminate कर दिया, तो अगर आपको तुक्का मारने की जरूरत भी पड़े तो B और C में मारोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी आंसर गेटिंग राइट रादर देन 25% फ्लैट. एक तो तुक्का मारना नहीं चाहिए, पर नौबत आ ही गई है तो एलिमिनेशन टेक्निक्स रियली हेल्प्स लॉट ऑफ टाइम सेविंग. As per the conventions of Western world, the great regression can be settled with all the following except self-sabotage, heightened creativity, refusal of independence and a rejection of autonomy, and dysfunctional behavior patterns. Straight statement, heightened creativity due to regression to infantile beings. Not directly spoken in the passage. बाकी तीनों के बारे में ऑलरेडी कहा है और आपको इसमें एक्सेप्ट ढूंढना था, राइट? This was a straight question. Which of the following should provide the best criticism of author's view? It can pave the way for new ways of thinking and living. ये रिग्रेशन की बात हो रही है कि रिग्रेशन जो है नए सोचने के नए तरीके और रहने के नए अंदाज खोल सकता है. क्रिटिसाइज करना है उसको. Regression means a return to old ways. Adults today are returning to childhood lifestyle censored without any experimentation, creative play happening in them. Many adults who return to childhood comforts and way to go out depression and trauma. Developing new ways of thinking and living is not a primary motivation most. Criticism करना है आपने सर. इसमें की वर्ड क्या है? न्यू वेज. न्यू वेज कब क्रिटिक होगा, आप कैसे वीकन करोगे उसको, जब बताओगे नया कोई तरीका ही नहीं. तो ऑप्शन बी जस्टिफाइज न्यू वेज को अटैक कर रहा है. Adults who are returning to their childhood lifestyle and senses without any experimentation and creative. न्यू वेज की बात करें भाई, न्यू वेज कहां से टारगेट होनी चाहिए? एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिव प्ले से, वो तो हो नहीं रहे. तो बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following can be inferred about two forms of regression that the author discusses? दो चीजों से कही थी, एक पॉजिटिव एक साथ में थोड़ा सा नॉट सो पॉजिटिव. Both forms are far apart, essentially the same. Forms are different yet originate from the same source, and both forms cannot coexist in society. एक पैराग्राफ जब मैंने हाईलाइट भी किया था, right? We spoke about it. Both forms are different yet originate from the same source. Okay. Again, I'll just get off the screen, pause the screen, read the passage, and then follow the questions thereafter. On its 60th birthday, India is close to achieving the great past stages of which its early founders dreamed. ग्रेट पावर की बात हो रही है. 60th बर्थडे का मतलब ये 2007 की बात हो रही है, 6-7 की बात हो रही है, उस टाइम की बात है. I believe most of you were not even born at that time, but still. In 1964, the year that English was supposed to have been phased out. ये चलो अब पहले ये करते हैं, थोड़ा सा इसकी पहले 4 लाइन पढ़ लेते हैं, सब कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं. On its 60th birthday, India is close to achieving the great power, states of which its early founders dreamed. But it has already achieved world renown
in a field Nehru never anticipated and perhaps would not have approved the production of English literature. वो कह रहे हैं कि जो ड्रीम तो बना रहे हैं बट शायद नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इंडिया इतना इंग्लिश लिटरेचर का इतना बड़ा पावर बने जो बन गया. Nationalists saw English as one of the chains that bound India to Soviet hope that once the Raj was said, मतलब अंग्रेज खत्म होंगे तो यहाँ से जाएंगे तो अंग्रेजी को साथ ले जाएंगे, पर वो हुआ नहीं. This was not because literacy achievement thing, जो नेहरू wouldn't have liked it. ठीक है. Writing 15 languages में यहाँ से पढ़. In 1964, the year that English was supposed to have been phased out, Buddhadev Bose, a renowned Bengali poet, declared that Indian literature in English was now dead. This, as we know, did not turn out to be true. It is Indian writing in English, not the vernaculars, that defines the nation's literature abroad. The failure of Nehru's cultural project was, in fact, the result of the high modernist taste of India's governing elites. While Nehru employed the Swiss modernist Le Corbusier to build Chandigarh, the frigid and alternating new capital of new partition Punjab. Okay? Then he says, to attempt to impose Hindi as India's linked language proved disastrous. After this, Indian English, once declared dead, was reborn as masalais, chutneyfied English and midnights, literary grandchildren, sentenced, payment fortune. Okay? And then we talk more. Critics do not extreme question the value of flood of English novels, blah blah blah. तो अगर आप इसमें देखो तो आपको इसमें इंग्लिश के बारे में यूज हो रहा है. इसमें आ रहा है कि इंडिया जब फ्रीडम मिली थी तो लोगों ने सोचा था कि एक टाइम पर इंग्लिश इंडिया से खत्म हो जाएगी और इंडिया लिटरेचर तो बढ़ते जा रहा है इंग्लिश में. एक बार हमने डिक्लेयर किया था कि ये मोस्ट सेंसेशनल प्रिवेंट सलमान रुश्दी की बुक मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत बड़ा सेंसेशन रिवाइवल था इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश के पर्सपेक्टिव. तो दिस पैसेज is factual but needs a lot of interpretation. The core idea of the passage is best denoted by which of the following. English literature in India has seen a dramatic change in form and scope. Ascertaining English as the language of India was possible due to Indian elites. Language of former colonial masters continues to be prevalent in India's written culture despite Nehru's dream of independent literature. English literature, which is earlier seen as a symbol of servitude, is considered a mirror of India's culture. अब चारों स्टेटमेंट्स थोड़ी सी ठीक तो लग रही हैं, है ना? लग तो सारी ठीक है, ये भी है वो भी है. So how do we identify what is the right answer? English literature in India has seen a dramatic change in its form and scope. We don't know that. Form and scope of literature has not been identified. Language की बात हो रही है बेटा, इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं है, राइट? तो इसको हम वहां से हटाएं. Ascertaining English as the language of India was possible due to the Indian elites. Certain तो नहीं था Indian elites करके possible. There could have been other reasons as well. Acceptance था, but they continued doing it as fine. But ascertain is too strong a word to put across here. So that's really clear. See, the language of the former colonial masters continues to be prevalent in India's written culture despite Nehru's dream of independent literature. ये पूरा पैसेज को कॉन्टेक्स्ट को समझाता है ना कि भाई नेहरू जी तो चाहते थे कि इंग्लिश एक समय के बाद इंडिया में खत्म हो जाए, लेकिन आज तक चली आ रही है. बी एक छोटा सा लिमिट बता रहा था, है ना, लेकिन ये पूरा पैसेज को समराइज कर रहा है. एंड डी इंग्लिश लिटरेचर व्हिच वाज अर्लियर सीन एज सिंबल ऑफ ये mirror of India's culture is cultures too big to be defined in one line as per the passage. Of the four given options, A and D could be eliminated because of English literature, one word in India's culture, not defined here. C और B में थोड़ा challenge हो सकता है, लेकिन asserting English language of India is possible to the Indian elites. Possible to Indian elites is too narrow a statement to be defined as a core idea of the passage. Core idea would mean जो शुरू से लेकर end तक को connect करे, and statement C does it fairly well as compared to the other options. So we mark C as the answer. Which of the following is true as per the passage? A famous Bengali poet very aptly foresaw the demise of the English language in Indian literature. Nehru was against literature and literary advancement in New India. Certainly not. India's identity around the globe is determined through the vernacular language of the nation. वो तो इंडिया की बात, तो इंग्लिश की बात कर रहे थे. Indian elites prefer to send their children to English medium schools.
D is the answer that we directly get from the passage here. According to the passage, which of the following can be most strongly attributed to revival of English literature in India? Phenomenal success of midnight children, preference of India leads English language, ever increasing demand for English literature in the Western world, emergence of writers like Christine. Strongly, अच्छा जब ऐसा वर्ड होता है ना थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन ही होते हैं इसमें, तो इसमें वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से कनेक्ट करना है. जब लास्ट पैराग्राफ किया था मैंने सिर्फ सलमान रुश्दी का, I was highlighting that part here. This connects from there. The phenomenal success of Salman Rushdie's Rushdie's Midnight Children was a place where revival happened. ये एक word passage में लिखा भी है. Let's go back. This one. But the most sensational event in revival of English was the success of Salman Rushdie's Midnight Children. Direct question on the passage. जो ऐसे questions हैं, where I put those pointers, please see that we are able to get the questions directly. So here is the answer. 39. Salman Rushdie's Midnight Children faced all the following kinds of reactions. Criticism directed towards the perceived audience of the book. Attack on the book and its publication over the unworthiness translation of the book. Dubiety over its creativity owing to the use of foreign language, or criticism directed towards the non-compliance with the Indian type of books. Now let's go back to the passage here because कई बार हमको रेफरेंस की चीजें बहुत याद नहीं रखते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको. The attempt to impose Hindi as the India's language rights in the West, but the most sensational event after this, Indian English once declared dead was reborn, masalized, technified, and midnight literature. Success of literatures provoked mixed reactions amongst the practitioners. They have much backbiting, spurning the true forms of Indian literary prose, the exquisite fragment, the intense short story for the alien but lucrative and sometimes flappy flamboyance of magic tricks. In India itself, a full-blown backlash grew in the form of the nativist or Desiwar movement, strong in the West world. So, यहाँ तक आपका this question comes in from this text. So, when we get back to this question, Salman Rushdie, now criticism directed towards the perceived audience of the book. Attack on the book and its publication, unworthiness translation. Right? हमको एक्सेप्ट ढूंढना था ना. A, C और D डायरेक्टली लिंक्ड है वहां पे जो हम पढ़े हैं अभी. Attack on the book and its publication over the unworthiness of translation of the book was not the type of reaction that we got. Now my suggestion is guys, इस वीडियो को लर्निंग्स ये देखना है कि जब हम कभी पैसेज पढ़ते हैं हर पैराग्राफ का एक कोर मैसेज होता है. आइडेंटिफाई द कोर thought behind the paragraph. A passage will be divided into 3, 4, 5 different paragraphs. Every paragraph is a different message. Understand that message of that paragraph. It will help you in connecting the dots better. हो सकता है आपको लिखो कि ये एक जगह ट्रेन से जाना है एक पैराग्राफ में और ट्रेन जर्नी डिफाइन कर रखी है, रास्ते में खाने वाला है, रास्ते में चाय वाला है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दैट, बट ये रिमेंबर करना जरूरी है सेकंड पैराग्राफ में ट्रेन की जर्नी है. So even you have to look at the answer, you are able to identify कि second paragraph है ट्रेन की जर्नी वाला, so you save a lot of time. ठीक है, चलो, thank you, all the best, God bless you.